Hello students, today I am going to continue Chapter 7 of Economics, Standard 12 Commerce, Population, the extra lecture number 2nd, which was remained, right, after the completion of 8. Okay, so let's start with the points regarding the measures to control population. Okay, different measures are there to control the population. अगर हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है उसके कई मेजर्स हैं, उसके पीछे कई डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करने से शायद पॉपुलेशन घट सकता है या बढ़ नहीं सकता है. वी ऑलरेडी डिस्कस द 2 पॉइंट दैट वाज द मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस. सबको उसका एजुकेशन दो, नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉपुलेशन बट ऑल्सो द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर पॉपुलेशन एंड सम ऑफ द लिमिटेशंस इन द फ्यूचर में क्या होगा अगर पॉपुलेशन बढ़ता ही रहा तो उसका एजुकेशन दो. ऑल्सो लिटरेसी रेट रिलेटेड टू दैट एजुकेशन मस्ट बी गिवन. अनदर थिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन रिलेटेड पॉइंट्स, उनको अवेयर करो. अनदर पॉइंट दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग के लिए कई प्रोग्राम हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, राइट. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट 2 or 3 points regarding the population policy related to the family planning, right. Sterilization was there also discussed. So looking after these 2 points, connected with that, third point is that increasing the age of marriages and also raising the status of women. हमको यहाँ 2 चीज करनी है. पहली चीज जो है एज ऑफ द मैरिजेस जो है खास करके लड़कियों के लिए, विमेन के लिए, उसको हमें बढ़ाना है. एंड अनदर थिंग दैट इज द स्टेटस ऑफ विमेन. विमेन का स्टेटस इन सम ऑफ द एरियाज, मोस्ट इन द रूरल एरियाज इज वेरी लेस. वो स्टेटस को हमें ऊपर ले जाना है. सो दैट इज द पॉइंट वी विल डिस्कस हियर. आई विल डिस्कस हियर. लेट्स स्टार्ट विद द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज. लीगल एज फॉर मैरिज, राइट. लीगल एज मस्ट बी रेज ऑफ मैरिज फॉर वीमेन. वीमेन के लिए अभी जो भी एज है हम देखते हैं, राइट, उसको लीगली अभी जो है उससे हमें बढ़ाना पड़ेगा. बिकॉज द फर्टिलिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड थ्रू द वुमन इज 14 ईयर. 14-15 ईयर से पर्टिकुलर फर्टिलिटी वीमेन की हो जाती है. शी कैन एबल टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड. सो सिंपली लीगल एज मस्ट बी डिसाइडेड. इट इज डिसाइडेड बट उसको रेस करना है, राइट. एंड देन आफ्टर कॉर्पोरेट कैन बी ऑफिशियली लीगली उसको हमें बढ़ाना होगा. देन एंड देन द बर्थ रेट मे बी इट विल बी अंडर द कंट्रोल. क्योंकि छोटी सी एज में अगर लड़की की शादी हो जाती है तो सी इज ऑल्सो एबल टू गिव द बर्थ टू अ चाइल्ड एट एज ऑफ 14. सो क्या होगा, रूरल एरिया में मोस्टली द पॉपुलेशन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर मैरिजेस. तो उसको हमें घटाना है. अनदर थिंग एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी, राइट, सॉरी पॉलिसी एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एज ऑफ मैरिज फॉर द वीमेन. नाउ इट मस्ट बी, इट इज इन द पर्टिकुलर अमेंडमेंट. अभी तो वो सोच में चल रहा है, राइट. इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 20 years. तो एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एज ऑफ मैरिजेस फॉर द वीमेन इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 20 years. अभी फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए वो 18 है, मेल के लिए मोस्टली 21 होती है, राइट. लेकिन रूरल एरिया में उसको देखा नहीं जाता है. 14-15 में भी हो जाता है. मेल का 21 नहीं देखा जाता, 20 या 18 में भी हो जाता है. सो फॉर वीमेन इट मस्ट बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 20. 21 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन it is under process. So that is the thing regarding the age of marriage. Another related to the raising status of the women. So status raise must be raised in the comparison to men. हमारा यानी I am a person with the good degree, I am a person with the high education, I am a person with the job. So my status is more than my wife. That means कि मेरा status मेरी बीवी से ज़्यादा है. तो सिंपली थिंग है, माई वाइफ और से एनी लेडी, राइट, उसको देख लो, उसका स्टेटस मार्केट में बहुत कम है. उसको कोई पूछता ही नहीं बिकॉज शी इज द पर्पस, शी इज द लेडी विद द वर्क ऑफ होम, राइट.
उसको हम बोलते हैं गृहिणी, उसको हम बोलते हैं हाउस वाइफ। शी इज नॉट हाउस वाइफ, शी इज क्वीन ऑफ वाइफ, लेकिन हम उसको देखते नहीं। तो उसका कंपेरिजन टू मैन वो स्टेटस हमें बढ़ाना है। अगर वो स्टेटस बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट इन द मार्केट, इन द पर्टिकुलर सोसाइटी, हर स्टेटस विल इंक्रीज। तो सिंपली कंपेरिजन टू मेल और मैन, स्टेटस मस्ट बी रेज्ड ऑफ द women, and also equal opportunities in the different field, in the education and in the employment. Government is thinking about this one. गवर्नमेंट सोच रही है कि और कई स्टेट ने तो दे भी दिया है, और सम ऑफ द इन पॉलिटिकल parties, right, the particular percentages are increased from 33 to 50%, right. Maybe the results are different, maybe the information, maybe it is quite different than the whatever information is given by me. अभी जो मैं दे रहा हूँ उससे शायद थोड़ी कम या ज़्यादा हो, लेकिन जो 30 या 33% था उससे बढ़ा के 50 कर दिया है कई पॉलिटिकल पार्टीज ने। सो दैट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द opportunities, it will be increase. उनको एजुकेशन में भी बेनिफिट मिलता है। तो देखो इन द स्कूल एंड कॉलेजेस मे बी द फीस आर नॉट टेकन, फीस आर टेकन, मे बी द रिलैक्सेशन इज गिवन, राइट, इन द बस पास, right, in the particular transportation, the commute, whatever the commute is done by the girl, right, from home to her house to the school, maybe the pass is, or maybe the rent is not taken by the government, right? GSRTC, especially in Gujarat. So that is education related good things for the women, ladies and employment. उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दो, परसेंटेज उनका बढ़ाओ, राइट। हमारे में क्या है इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जॉब सर्विस में 60, 70, 80, 20, 80, 90, that is 80 to 20, 70 to 30, the percentages are in the sense of the employment, women and men. Men के होते हैं 60, 70, women के होते हैं 30, 20. That is not good. तो वो भी बड़ा है, जनरली ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको प्रेफरेंस मिलना है, लेकिन सामने उनका क्वालिफिकेशन भी कम होता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन में उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। दैट्स व्हाट इज रीजन। ऑल्सो नाउअडेज वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गिविंग देम डिफरेंट बेनिफिट्स, दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। वीमेन can control the size of family. ये कैसे हो सकता है? Because she is good qualified, she took already the education, right, up to the bachelor's level, sometimes she is master's level completed. Also she will able to get, or she will employ in some of the good fields, उसको जॉब मिल जाती है, अच्छा एजुकेशन होता है, तो by default she can control the family size, राइट, वो फैमिली की साइज को कंट्रोल कर सकती है। उसको ऐसा नॉलेज है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको ऐसा नॉलेज है कि अवर पर्टिकुलर फैमिली इज इंक्रीजिंग एंड वी बोथ पीपल are not able to satisfy the needs of the all children. That's why then after she realized that we have to control that family, we have to control the particular population, so she can understand if she is educated and employed. So next one, after the particular status and marriage stage, incentives and disincentives. Incentives तो आपने बहुत सुना है, हम उसे हम ले चुके हैं, right? That is the good things. But disincentives, some of the countries, mostly high populated countries, are giving this type of disincentives. सुना है? आज सुनो. Let's see. Incentives, you know that one. As per the government rule or by the government of India, this type of the incentives are given to the couples, to the family members, to the children, that are mostly to the couples. See the example. Incentives, mostly incentives what are the financial, non-financial, right? Here we are talking about we will talking about the financial. So incentives are given to couples, those who undergo the sterilization process. हमने सुना था और आपको बोला भी था उस दिन in a particular family planning program में sterilization, that is the method for, उसको बोलते हैं government. Some of the hospitals are killing some of the germs, killing some of the things, removing some of the things which will increase the particular family. उसको control कर देगी government by giving some of the vaccines or some of the tablets or some of the pills, right? So those who will pass through or undergo through that sterilization, they will get the financial incentives. That is a good thing. अगर आप वो प्रोसेस से पास होते हो, गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया उसके हिसाब से, तो यू विल गेट द फाइनेंशियल इंसेंटिव, आपको पैसे मिलेंगे। सो मोस्टली दिस इज फॉर द रूरल एरियाज, राइट। उसके लिए हमें एक प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, दैट इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको मिलता है, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। आपको पैसे मिलेंगे अगर आप फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते हो तो एक साइड से अच्छा भी है, आपका फैमिली होगा है 1 2, उसको बढ़ाना नहीं तो यू कैन पास थ्रू दिस प्रोसेस, दैट इज अ फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल
that is the disincentives China. At the first rank, China has adopted the disincentives. Right? कैसे? So they will control or to control the population. So they are getting some of the facilities related to the particular family. So here facilities are withdrawn. उनको जो भी facility दी जाती है to those couples, right? From those couples who have more than 2 or 2. That means कि those who have 2 or more than 2 children. अगर आपके घर में आपके फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो whatever the facilities are given to you will be withdrawn by the China. अभी तक ऐसा चल रहा था लेकिन nowadays some of the relaxations are given, right? 2 or 3 is allowed, right? But simply before 2015-16 ऐसा था. अभी भी कई पार्ट्स में ऐसा है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना में, वहाँ विड्रॉल हो जाती है. कपल्स दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन द डिफरेंट फैसिलिटीज आर विड्रॉल, लेकिन रिलैक्सेशंस है. ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट द particular China, the first rank of a populated country. Now in our country, talking about India, in our country, in election, not only in the election of the parliament, but in the election of local self government. जो local self government के election होते हैं, right? उसमें the couple who has more than 2 children, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, cannot contest in election. वो इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी अपना फॉर्म नहीं भर सकते एज अ कंटेस्टेंट. वो एक कंटेस्टेंट की तरह उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते. दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. ये सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, बाकी किसी भी और गवर्नमेंट पार्लियामेंट में नहीं होता है ऐसा. एमएलए एमपी के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता. फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन इज फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दैट इज द गुड थिंग. एंड दोज हु वांट टू become a part of the particular country, right, in the assembly, maybe it is good for the decrease the population, or we can say not to increase the population. Okay, that is the third thing. Fourth thing. Now fifth and last thing, right, that is the measure expansion in medical services. Medical services बढ़ी है and also its growing effectiveness. मेडिकल सर्विस तो एक्सपांड हुई है, उसके साथ उसमें थोड़ी बहुत ग्रोइंग इफेक्टिवनेस आई है. कैसे? इन आवर कंट्री, इन इंडिया, डेथ रेट हैज कम डाउन. डेथ रेट कम हुआ है, अभी भी होगा, राइट? ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस एट प्रेजेंट डेथ रेट इज इंक्रीज्ड, राइट? बट ओवरऑल डेथ रेट इज गोइंग और इट इज डाउन. सो मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज, डेथ रेट डाउन तो हुआ लेकिन जब डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा है. We are developing. India is still developing country. We have developing economy. So developed country के हिसाब से हमारी थोड़ी डेथ रेट ज़्यादा है लेकिन it's down. So through this particular information here we have some basic information through the science. Here we are getting the help of the science. Science बहुत आगे बढ़ चुका है, science and technology. Because of that science, different type of the services are increased in childbirth. राइट? अभी तो IVF फैसिलिटी आ गई है, कई ऐसे डिफरेंट टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटी भी है. दैट कई ऐसे भी सम ऑफ द फैसिलिटीज आर स्टॉप बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ, राइट? सो उसको गवर्नमेंट ने स्टॉप भी कर दिया. लेकिन कई ऐसी फैसिलिटीज है ड्यू टू द पर्टिकुलर साइंस जिसके हिसाब से चाइल्ड बर्थ बढ़ा है. और दूसरी बात हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न भी. कभी कभी ऐसा होता था कि जो पर्टिकुलर चाइल्ड न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी इज देयर, maybe he or she is not able to get the proper medical services, right, at the age of the 0 to 1, that is infant, right? तो भी अब बढ़ चुकी है, उनके लिए स्पेशल ICU हो चुके हैं, राइट? पेडियाट्रिक ज़्यादा हो रहा है, अभी पेडियाट्रिशियंस भी हो रहे हैं, राइट? डॉक्टर्स जिसको बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर पेडियाट्रिशियन, वो भी फैसिलिटी दे रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी को. और सिंपली अप टू 10 ईयर्स पेडियाट्रिशियन उसको ट्रीट करता है, उसको संभालता है. सो साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है. डिफरेंट फैसिलिटीज फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, डिफरेंट फैसिलिटीज रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी increasing. Nowadays vaccination facilities are there, not only for the newborn babies but also for the all. So vaccination effectiveness is there and is increasing. 0 to 10 years वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, उसको पास करना पड़ता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए. और सम ऑफ द डिसीज के लिए भी फॉर द सम ऑफ द स्पेशल डिसीजेस दिस वैक्सीनेशन आर इम्पोर्टेंट. सो ऑल्सो अवेयरनेस, अभी तो वैक्सीनेशन सबके दिमाग में होगा ही, राइट, ड्यू टू डिसीज. सो अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिसीज, जो रोग फैलते हैं, चेपी रोग हम उसको बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज आते हैं, उसको
रोकना तो पड़ेगा ही। अगर वी आर नॉट एबल टू, मे बी समटाइम्स इट हैपेंस कि दिस टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीजेज आर नॉट स्टॉप्ड, उसको हम रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एड्स। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिसीज लाइक एड्स is to be increased, उसकी अवेयरनेस बढ़ी है। Nowadays the cases regarding the AIDS are decreasing. Cases regarding the different communicable diseases are decreasing due to the awareness in the mind of the people, especially in the mind of the rural people. Okay, so also this increase reduction is there in the infectious जिससे इन्फेक्शन लगता है, ऐसे कई डिसीजेस हैं, राइट। उसके हिसाब से भी सी जो कम्युनिकेबल डिसीज है, राइट, इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन लगता है, उसका शायद कोई ना कोई कनेक्शन है रूरल एरिया से, राइट। अर्बन में तो है ही, उसका कम हो रहा है, राइट, रूरल में भी कम हो रहा है। ऑल्सो सम पर्सनल रिलेटेड डिसीजेस, राइट, दैट शुड बी डिक्रीज, ओके, सो इट मस्ट बी डिक्रीज, उसको भी होना, उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। तो हियर द अवेयरनेस रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस are decreasing and the awareness is increasing. Also infectious diseases उसका रिडक्शन हो रहा है, और सेक्स रिलेटेड डिसीज दैट इज द पर्सनल डिसीज, उसके लिए भी अब रिडक्शन है, उसके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट है थ्रू दी डिफरेंट टाइप ऑफ दी फैसिलिटीज ऑफ द डॉक्टर्स। कंसल्टिंग डॉक्टर्स आर देयर, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, सो दैट इज द पर्टिकुलर एक्सपांशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर ऑल। ओके, after completion of all this point, one information is there and I want to share that information especially with the children, because our country India is the first country to introduce the population policy to control the population। हमारा population आपको मालूम है, we are at the second rank, 2030 बोल रहे हैं लेकिन 2050 तक शायद हम फर्स्ट पे आ जाए अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये डेटा ऑफिशियल नहीं है, एज पर माय रीडिंग, एज पर माय नॉलेज आई एम गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू यू दैट कि 2030 या 2050 तक हम शायद किसी भी तरह अगर ये रेट रहा तो फर्स्ट रैंक पर पहुंच जाएंगे। तो उससे कुछ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 देखो तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर population was introduced by our country India first time throughout the world, right, in 2000. So it was given by the government. And another thing regarding that policy, that one committee was set up, पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बैठी थी, राइट। कि आपको इसलिए सेट कर रहा हूँ कि शायद एक मंथ के लिए आपको चले। दैट कमेटी रिगार्डिंग द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ये नाम याद रखना है आपको फॉर वन मंथ, राइट। Who gave the idea, who take the leadership of the particular population policy, that is Dr. M.S. Swaminathan, right? And the last one, because of the population policy, because of this all points measures to control the population, we discussed the total 5 points: mass education, awareness, effectiveness of family planning program, increase the age of the marriages, and also the women's status in the market, women's status in the society, also the incentives and disincentives, and last one that is the expansion in medical services and its growth effectiveness। तो ये पांचों पॉइंट अपने दिमाग में उतार लो, अपने दिमाग में लगा लो, not only for the syllabus, not only for the studies, but for the future also। Then and then the social welfare will increase, people will looking after the particular things, our welfare, society's welfare will increase, and also that will improve the awareness of population growth। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसा होता है उसमें शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, लोगों के दिमाग में वो शायद उतर जाएगा, और मे बी द पॉपुलेशन विल अंडर कंट्रोल। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्यूचर, एज अ जनरेशन, राइट, नेक्स्ट जनरेशन वी हैव टू थिंक अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ वी आर एट द स्टेज वी हैव टू थिंक अबाउट दैट इज द पॉपुलेशन, सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।